All right, let's start with the reading part. This is the reading from book 17, reading test 3. Reading test 1, the thylaxine. Thylaxine. So it looks like this is some kind of thing, right? All right, so let's start with the first paragraph. The extinct means something that is over. जो लुप्त हो गया है. Thylaxine, also known as the Tasmanian tiger, was a marsupial. यानी thylaxine क्या है? एक प्रकार का प्राणी, like the Tasmanian tiger. The Tasmanian tiger छोटा सा guinea pig जैसा animal, like a big rat or a mouse. So that bore a superficial resemblance to a dog. वो कैसा दिखता था? Looked like a dog. Its most distinguishable feature, यानी उसमें सबसे जो पहचानने लायक जो qualities है, was the 13 or 19 dark brown stripes. उसके ऊपर dark brown color के पट्टे थे over its back, पीछे, beginning at the rear of the body, एकदम पीछे से start होते हैं and extending onto the tail. पूंछ तक dark strips थे. The thylaxines average nose to tail length, उसकी जो नाक से लेके पूंछ तक की जो length थी for adult males was 162.6 centimeters compared to 153.7 centimeters for females. What is it? This is the description के thylaxine क्या है? It is a type of an animal. All right, so let's read the second para. Ria, can you read it? Yes, sir. The thylaxine appear to occupy most type of terrain except dense rainforest with open eucalyptus forest thought to be its prime habitat. In terms of feeding, it was exclusively carnivorous, and its stomach was musculous with an ability to distend so that it could eat large amount of food at one time, probably an adaptation to compensate for long periods when hunting was unsuccessful and food scarce. The thylaxine was not fast runner and probably caught its prey by exhausting it during a long pursuit. During long distance chases, thylaxine were likely to have relied more on scent than any other sense. They emerged to hunt during the evening, night, and early morning and tended to retreat to the hills and forest for shelter during the day. Despite the common name tiger, the thylaxine had a shy, nervous temperament. Although mainly nocturnal, it was sighted moving during the day, and some individuals were even recorded basking in the sun. Further details about the thylaxine है कि the thylaxine appear to occupy most types of terrain. Terrain यानी जो अलग-अलग geographical landscapes होते हैं, जैसे कोई जगह होते हैं जहाँ पे बहुत पत्थर है, पत्थर वाली जगह, right? रेती वाली जगह, मिट्टी वाली जगह, जंगल वाली जगह, प्लांट्स वाली जगह या पानी वाली, तो उसको अलग-अलग जगह को टेरेन बोलते हैं. एक्सेप्ट डेंस रेन फॉरेस्ट, यानी बहुत घने जंगलों में नहीं रहते थे, उसके सिवाय हर प्रकार के जगह पे रहते थे. विथ ओपन यूकोलिप्टस मींस नीलगिरी फॉरेस्ट thought to be its prime habitat. यानी ये कहा जाता है कि उसका मेन जो रहने की जगह थी, that was the eucalyptus forest. In terms of feeding, खाने की बात करें, it was exclusively carnivorous. Carnivorous यानी मांसाहारी, वो पूरी तरह से मांसाहारी जीव था. And its stomach was muscular, यानी उसके अंदर muscles थे, with an ability to distend so that it could eat large amount of food at one time. यानी उसका मसल ऐसा था कि वो बहुत सारा खाना खा सके. Probably an adaptation to compensate for long periods when hunting was unsuccessful and food scarce. यानी वो इस तरह से बना हुआ था उसके बॉडी में कि अगर लंबे टाइम तक खाना नहीं मिले या हंटिंग में वो सफल ना हो और वो शिकार नहीं कर पाए, तो वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके. The thylaxine was not a fast runner, वो दौड़ नहीं सकता था, and probably caught its prey by exhausting it during a long pursuit. तो यानी बहुत तेजी से दौड़ नहीं सकता था, लेकिन वो उसके पीछे बहुत टाइम तक दौड़ता था
शिकार के पीछे, तो इससे वो शिकार जो है वो थक जाता है, उसको थका के फिर उसको मारता है। ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस चेजेस, जब वो उसके पीछे भागता है, थाइलैक्सीन्स वर लाइकली टू हैव रिलाइड मोर ऑन सेंट देन एनी अदर सेंस, तो वो उसकी सुगंध, उसकी जो गंध होती है उससे ही उसको फॉलो करते थे। They emerged to hunt during the evening, night, and early morning. वो रात को निकलते थे, इवनिंग में निकलते थे या फिर अर्ली मॉर्निंग, and tended to retreat to the hills. वापस वो हिल्स में छुप जाते थे, and forest for shelter during the day. Despite the common name, उसका भले नाम था टाइगर, लेकिन the thylaxine had a shy, nervous temperament. यानी वो ऐसे, वो प्राणी बहुत शर्मिला था, यानी अगर कोई इंसान आ जाए तो वो छुप के भाग जाता है। Although mainly nocturnal, nocturnal यानी रात वाला, जो रात को जगता है। It was sighted moving during the day, जबकि वो बहुत रात का ही प्राणी था, लेकिन वो कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है। Some individuals were even recorded basking in the sun. कभी कभी ये थाइलैक्सीन्स कभी कभी ऐसे धूप में सोए हुए भी मिले हैं, लेकिन अभी वो एक्सटेंड हो गया, अभी वो नहीं है। Let's read our first set of questions. तो थाइलैक्सीन के लिए अच्छा, मर्सुपियल का मीनिंग क्या है? मर्सुपियल यानी ऐसा प्राणी, अ मैमल सच एज कैंगरू हुज यंग आर बोर्न इनकम्प्लीटली डेवलप्ड। कैसे पैदा होते हैं कि पूरे पूरे डेवलप नहीं होते, तो एक बार पैदा होने के बाद वो अपने पाउच में रखते हैं, एंड दे आर टिपिकली कैरिड एंड सकल्ड इन अ पाउच ऑन द मदर्स बेली। तो बच्चा पेट में ही रहता है, तो वैसे वो पेट में डेवलप होता है। कैंगरू कैसे बच्चे को पाउच में रखता है? आंसर इन वन वर्ड, तो हमने अभी जो पढ़ा उसी के रिलेटेड। appearance and behavior, it looked rather like a dog. It had a series of stripes along body and tail. Ate an entirely dash diet, मांसाहारी डाइट थी। तो what is the answer? Carnival. Carnivorous. It's carnivorous. Probably depended mainly on dash while hunting. वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता था? सुगंध पे, गंध के ऊपर। आंसर इज सेंट, या। एंड young spent first months of life inside its mother's breast. वो मम्मी के किस जगह पे वो लोग अपना पहले कुछ महीने को स्पेंड करते थे? पाउच, नॉट बेली। वी रेड इट, नो? पाउच। પાઉચ વાળો લખ્યો ને, મીનિંગ આપેલું છે પાઉચ। તો બી અહીંયા ફરીથી પડશે, પાછું મળશે તમને। Just read the next paragraph. The thylaxine had an extended breeding season from winter to spring, with indications that some breeding took place throughout the year. The thylaxine, like all marsupials, were tiny and hairless when born. Newborns crawled into the pouch on the belly of their mother and attached themselves to one of 4 teats, remaining there for up to 3 months. When old enough to leave the pouch, the young stayed in a lair such as deep rocky cave, well-hidden nest or hollow log, whilst the mother hunted. Talks about the baby, so you get the answer here. The thylaxine had an extended breeding season, यानी उनकी ब्रीडिंग जो होती थी वो विंटर टू स्प्रिंग होती थी, with indications that some breeding took place throughout the year. कुछ प्रकार की ब्रीडिंग थी जो पूरा साल होती थी। The thylaxine, like all marsupials, marsupials यानी कैंगरू की तरह, हर एक की तरह, was tiny and hairless when born. जब ये पैदा होता है तब उसके शरीर पे बाल नहीं होते, तो वो बच्चे माँ के पाउच में रहते हैं। Newborns crawled into the pouch of the belly of the mother. Right, here is the answer. Into the pouch on the belly. Belly के ऊपर जो pouch है उसके अंदर. So they are not inside the belly. They are on the pouch of the belly and attach themselves to one of the 4 teats, remaining there for up to 3 months. 3 महीने तक वो वहीं पे रहते हैं। When old enough, जो बड़े हो जाते हैं, to leave the pouch, the young stayed in a lair such as a deep rocky cave. के गुफा में रहते हैं। Well hidden nest, यानी कोई नेस्ट में छुप जाते हैं, या हॉलो लॉग, लकड़े के अंदर, बड़ा लकड़ा होता है उसके अंदर छुप जाते हैं। whilst the mother hunted, यानी वो थोड़ा बड़े होने के बाद वो प्रोटेक्शन में अंदर छुप जाते हैं। Manali, can you read the next paragraph? Yes, sir. Approximately 4,000 years ago, the thylaxine was widespread through New Guinea
and of main island Australia, as well as the island of Tasmania. The most recent, well-dated occurred of a thylacine on the main island is a carbon-dated fossil from Murray Cave in Western Australia, which is around 3,100 years old. Its extinction coincidentally closely with the arrival of wild dogs called dingoes in Australia and a similar predator in New Guinea. Dingoes never reached Tasmania, and most scientists see this as the main reason for the thylacine's survival there. तो 4000 साल पहले the thylacine were widespread. वो हर जगह पे थे. न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया में थे and also on the islands of Tasmania. लेकिन the most recent well-dated occurrence of a thylacine on the mainland is a कब से जो हमें मिला है, जो उसका प्रूफ मिला है, is a carbon-dated fossil, जो फॉसिल मिला है from Murray Cave, ऑस्ट्रेलिया में, और वो है 3,100 years पहले का, right? Its extinction, ये प्राणी जब ये खत्म हो गए, यानी लुप्त हो गया, वो कब हुआ? It coincided, यानी वो सेम टाइम पे हुआ जब वहां पे वाइल्ड डॉग्स को लाया गया. यानी ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, तो उस आइलैंड पे जैसे शिप पे लोग आए बाहर से, अमेरिका से या यूके से कॉलोनाइजेशन के लिए, तो वो लोग अपने साथ डॉग्स लेके आए. तो इन डॉग्स ने शिकार करना चालू किया. अराइवल ऑफ वाइल्ड डॉग्स कॉल्ड डिंगोज. और जैसे ये एनिमल्स आ गए इन ऑस्ट्रेलिया, और वैसा एक सिमिलर प्रेडेटर इन न्यू गिनिया, ये दोनों जगहों पे ये शिकारी आ गए, उन्होंने उनको मार के खत्म कर दिया. डिंगोज नेवर रीच तस्मानिया, तो अभी तक वो वहां पे आए नहीं, और तस्मानिया के अंदर वो अभी तक मिले हैं, राइट? एंड मोस्ट साइंटिस्ट सी दिस इज द मेन रीजन फॉर द थैलेक्सीन सर्वाइवल देयर. वो वहां पे क्यों सर्वाइव हो गए? क्योंकि वहां पे डिंगोज यानी वो एनिमल्स वहां पे नहीं पहुंचे. जो आइलैंड पे नहीं पहुंचे वहां पे ये जो प्राणी था थैलेक्सीन, वो ज्यादा टाइम तक रहा. So हमने देखा कि वो स्पेंड करता है in its mother's pouch. Last evidence in the mainland Australia is 3,100 year old what? क्या किस चीज है? 3,000 साल पहले की कौन सी चीज मिली? कार्बन डेटेड. What is the answer? हड्डियां मिली ना? Fossil, right? Next. Probably went extinct in mainland Australia due to animals known as dingoes. Dingoes नाम के प्राणी की वजह से वो extinct हो गया. Reduction in dash and available sources of food वो partly responsible for decline in Tasmania. तस्मेनिया में वो क्यों मर गए? तो उसके पीछे का कारण अभी हम पढ़ेंगे. Komal, can you read the next para? Yes, sir. The dramatic decline of the Thylacine in Tasmania, which began in the 1830s and continued for a century, is generally attributed to the relentless efforts of sheep farmers and boundary hunters with shotguns. While the determined campaign undoubtedly played a large part, it is likely that various other factors also contributed to the decline and eventual extinction of the species. These include competition with wild dogs introduced by European settlers, loss of habitat along with the disappearance of prey species, and a distemper-like disease which may also have affected the Thylacine. The dramatic decline, यानी ये पूरे प्राणी गायब कैसे हो गए? of the Thylacine Tasmania, which began in 1830s and continued for a century. 100 साल तक वो कम होते गए. Generally attributed, वो किस चीज के लिए हम उसको क्रेडिट देते हैं? To the relentless effort of sheep farmers. वो sheep farmers थे and bounty hunters. Bounty hunters यानी शिकार करने वाले. Bounty hunters का मीनिंग है people who are paid a reward for killing a wild animal. तो वो लोग बेचते हैं, तो ऐसे लोग इसके पीछे पड़ गए. शीप फार्मर्स वगैरह सब इसका शिकार करने लगे. While this determined campaign, यानी ये जो उनका जो पूरा ये प्लान था, undoubtedly played a large part, इस चीज का बहुत बड़ा हिस्सा था. लेकिन उसके साथ साथ it is likely that various other factors also contributed to the decline. लेकिन दूसरे भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से कम हो गए, and eventual extinction of the species, और लास्ट में पूरे लुप्त और खत्म हो गए.
These include competition with wild dogs introduced in Europe by European settlers. क्या था उनके साथ? Competition in the of the wild dogs. वहां पे यूरोपियन सेटलर्स जो है उन्होंने वाइल्ड डॉग्स इंट्रोड्यूस किए. लॉस ऑफ हैबिटेट along with, तो उनका जो रहने की जो नेचुरल जगह थी वो कम हो गई, पेड़ काट दिए गए. विद द डिसअपियरेंस ऑफ प्रे स्पीसीज, और जिस चीज का वो शिकार करते थे वो खत्म हो गई. एंड अ डिस्टेम्पर लाइक डिजीज, और उनको एक रोग फैल गया व्हिच मे आल्सो हैव अफेक्टेड द थाईलैंड. तो ये सब कारण की वजह से ये लोग लुप्त होने की संभावना है. So reduction in dash and available sources of food were partly responsible for decline in Tasmania. Answer fifth one. Yes, reduction in their habitat. All right, let's read the next one. Roshni, can you read the next para? Yes, sir. There was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity at Melbourne Zoo in 1899. This was despite the large numbers that went through some zoos, particularly London Zoo and Tasmania's Hobart Zoo. The famous naturalist John foresaw the thylacines demise when he published his Mammals of Australia between 1848 and 1863, writing the numbers of this singular animal will speedily diminish. Extermination will have its full sway, and it will then, like the wolf of England and Scotland, be recorded as an animal of the past. So there was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity. यानी वो कैद में नहीं रह सकते थे, और कैद में उनको रखने से उनको बचाने के लिए एक ही ऐसा अटेम्प्ट हुआ जो सफल था, in Melbourne Zoo in 1899. This was despite the large number that went through some zoos. यानी कि बहुत सारे जो थाईलैक्सीन थे उनको जू में तो ले गए, particularly London Zoo and Tasmania's Hobart Zoo, फिर भी वो लोग एक ही ब्रीड के एक ही एग्जाम्पल को बचा सके. The famous naturalist John Gould foresaw the thylacines demise. Foresaw का मीनिंग है उसने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया, संभावना उसने उसकी बाबत में उसके बारे में उसने भविष्यवाणी की कि ये लोग मर जाएंगे. डिमाइस यानी उसकी मौत. द थाईलैक्सीन्स डिमाइस, जब उसने वो बुक लिखी, व्हेन ही पब्लिश्ड हिज बुक्स मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1843 एंड 1863 में लिखा था. उसने लिखा था द नंबर्स ऑफ दिस सिंगुलर एनिमल विल स्पीडीली डिमिनिश. उसने बुक में बहुत पहले लिखा था कि ये लोगों का जो एनिमल का आंकड़ा है वो धीरे धीरे लेकिन फटाफट कम हो जाएगा. एक्सटर्मिनेशन विल हैव इट्स फुल स्वे, यानी लोग उसको जोर में शिकार करेंगे, मार डालेंगे. And will then, like the wolf of England and Scotland, it will be recorded as an animal of the past. ये ऑथर ने बोला था कि ये तो धीरे धीरे इसका शिकार कर करके लोग इसको मार डालेंगे, जैसे हमने वुल्फ ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में मार दिए, तो ये एनिमल भी एक पास्ट का एनिमल्स बन के रह जाए. चैताली, नेक्स्ट वन. However, there seems to have been little public pressure to preserve the thylacine, nor was much concern expressed by scientists at the decline of this species in the decades that followed. A notable exception was T.T. Flynn, professor of biology at the University of Tasmania. In 1914, he was sufficiently concerned about scarcity of the thylacine to suggest that some should be captured and placed on a small island. But it was not until 1929, with the species on the very edge of extinction, that Tasmania's Animals and Birds Protection Board passed a motion protecting thylacine only for the month of December, which was thought to be their prime breeding season. The last known wild thylacine to be killed was shot by a farmer
in the northeast of Tasmania in 1913, leaving just captive specimens. Official protection of the species by the Tasmania government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on the 7th September 1936. However, यानी ये जानने के बावजूद कि वो प्राणी लुप्त होने वाला है, there seems to have been little public pressure to preserve the thylaxine. यानी ये प्राणी को बचाने के लोगों का कोई प्रेशर ही नहीं था. Nor was much concern expressed by scientists. ना ही कोई साइंटिस्ट ने कोई इसके लिए कोई कंसर्न एक्सप्रेस किया. At the decline of the species in the decade that followed, नहीं किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया. A notable exception was, और एक अपवाद था, T.T. Flynn. He was a professor of biology at the University of Tasmania. तो 1914 में इन्होंने बोला he was sufficiently concerned about the scarcity of the thylaxine. उसको इसकी चिंता थी to suggest that some should be captured and placed on a small island. कि ये प्राणी लुप्त ना हो जाए, इसके लिए उनको हम एक आइलैंड पे रख देना चाहिए. But it was not until 1929, और लेकिन तब तक with the species on a very edge of extinction, लेकिन एकदम वो प्राणी मरने के किनारे आ गया, तब तक किसी को ये नहीं हुआ that it was on the edge of extinction that Tasmania's Animal and Bird Protection Board passed a motion protecting thylaxines only for the month of December. कि दिसंबर मंथ में उनको बचाएंगे, which was thought to be their prime breeding season, कि इसमें इसका शिकार नहीं करना है. तब जाके ये लोग जागे. The last known wild thylaxine to be killed was shot by a farmer in the northeast of Tasmania. यानी एक फार्मर ने उसको लास्ट एनिमल जो था उसको मार दिया in 1930, leaving just captive specimens. और फिर बच गए जो कैद में थे वो बच गए. Official protections of the species by the Tasmanian government was introduced in July 1936, 59 days before the last known individual died in Hobart Zoo on 7th September 1936. जब मर गए उसके बाद इन्होंने प्रोटेक्शन प्लान लागू किया कि इसको मिला तो बचाएंगे, लेकिन इट वाज टू लेट. There have been numerous expeditions, यानी बहुत सारे ट्रिप्स हुई, जंगलों में जाके खोज हुई, and searches for the thylaxine over the years. सालों में बहुत खोज हुई, none of which have produced definitive evidence that thylaxine still exists. लेकिन आज तक उसका कोई भी सबूत मिला नहीं. The species was declared extinct by the Tasmanian government in 1986. यानी 50 साल के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये स्पीसीज लुप्त हो गई है. Very sad one. So you have questions, fill in the blanks. 6 to 13. Significant number of thylaxines were killed by humans from the 1830s onwards. 1830 के बाद बहुत लोगों ने उसका शिकार किया. Let's read 1830s is the keyword. तो 1830 के बाद क्या हुआ? Relentless, and it began in the 1830s and continued for a century. 100 साल तक यही चला. यानी 100 साल तक ये शिकारियों ने उसका इतना शिकार किया. Generally attributed to the relentless, यानी अटके बिना efforts of sheep farmers with shotguns. वो गन लेके इस प्राणी के पीछे पड़ गए. Answer for first one, 6th one. Is it true, false, or not given? True. Correct. True. It's true. Several thylacines were born in zoos during the late 1800s. बहुत सारे पैदा हुए थे. एक ही केस था, सिर्फ एक ही सक्सेसफुल ब्रीडिंग हुआ, बाकी कोई किसी का ब्रीडिंग नहीं हुआ. यहाँ पे लिखा है there was only one successful attempt to breed a thylacine in captivity in Melbourne. लेकिन कहीं और जगह पे उनका ब्रीडिंग नहीं हो पाया, यानी एक ही हुआ. यहाँ पे लिखा है बहुत सारे हुए. So second one, false. John Gould's prediction about the thylacine surprised some biologists. उसने जो prediction किया था कि बहुत सारे thylacines मर जाएंगे, ये prediction पढ़ के बहुत सारे biologists surprise हो गए. Not given. किसी को surprise हुआ या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता है. In the early 1900s, many scientists became worried. बहुत scientists को चिंता होने लगी about the possible extinction of the thylacine. तब जाके उनको चिंता होने लगी बहुत सारे साइंटिस्ट को. यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि इसने कंसर्न दिखाया था प्रोफेसर ने
या एक ही आदमी था, एक ही बंदा था जिसको उसकी चिंता हुई और उसके बाद इन्होंने पास किया मोशन। यानी किसी साइंटिस्ट को चिंता होने लगी, ऐसा कुछ था यहाँ पे। एक ही साइंटिस्ट था, लुक एट अ नोटेबल एक्सेप्शन वाज, यानी किसी ने, यानी नॉर वाज मच कंसर्न एक्सप्रेस बाय, ना तो कोई साइंटिस्ट ने उसकी परवाह की ना किसी और ने परवाह की। ये पब्लिक का भी प्रेशर नहीं था, साइंटिस्ट का भी पैसा प्रेशर नहीं था, लेकिन एक ही बंदा था जिसने किया। यानी प्रेशर की बात हुई है लेकिन बोला गया है कि कम, यानी many scientists became worried, so you can't say not given because there was one scientist who was worried. So answer is False. false. Not many, only one. And T.T. Flynn's proposal to rehome captive thylacine on an island proved to be impractical. उन्होंने बोला कि यार इनको एक आइलैंड पे ले जाओ तो बच जाएंगे। ये जो सोल्यूशन था रीहोम करने का वो प्रैक्टिकल नहीं था। यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने बोला he was sufficiently concerned, और उसका यही कहना था to suggest, उसने ये आइडिया दिया था कि उसको कैप्चर करके हमें एक छोटे से टापू पे रखना चाहिए तो सेफ रहेगा। लेकिन उस चीज का वो आइडिया जो था वो प्रैक्टिकल नहीं था। क्या वो प्रैक्टिकल था या नहीं था वो हमें पता नहीं है। सो आंसर इज not given. There were still reasonable numbers of thylacines in existence when a piece of legislation protecting the species during their breeding season was passed. जब उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनके ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे उसके ऊपर जब पास हुआ तब काफी सारे थाइलेसीन्स वहां पे जिंदा थे। यहाँ पे लिखा है कि जब ये ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जब पास हुआ, when with the species on the very edge of extinction, यानी ये जो प्राणी है बेचारा मरने के कगार पे पहुंच गया, तब जाके उन्होंने एक मोशन पास किया। यानी वो ऑलमोस्ट एकदम कम क्वांटिटी में रह गया। और यहाँ पे लिखा है कि there were still reasonable numbers. So answer is false. From 1930 to 1936, the only known living thylacine were all in captivity. यानी कि 1930 से 36 तक में जो रहने वाले जो थाइलेसीन्स थे वो सिर्फ कैद में ही थे। उसके बाद कोई बाहर जंगली प्राणी हमें मिला नहीं 1930 से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीसीज वाज लॉन्च्ड इन 1936। और यहाँ पे सी द लास्ट नोन वाइल्ड थाइलेसीन, यानी जो जंगल में जंगली देखने वाला प्राणी था वो 1930 में मारा गया जंगल में। उसके बाद 1936 में उनके पास जो लास्ट जो प्राणी कैद में बचा था वो मर गया। यानी जब वो लास्ट वाला मर गया जंगल में, उसके बाद हमने किसी को देखा नहीं। 1930 में किसी को जंगल में नहीं देखा, और जो था वो हमारे पास कैद में ही था। सो योर आंसर इज, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ट्रू। From 1930 to 36, the only known living thylacines were all in captivity. वो कैद में ही थे, because जो लास्ट वाला था 1930 में जंगली प्राणी मारा गया, उसके बाद हमने किसी को बाहर जंगल में नहीं देखा। यानी जो भी थे वो कैद में ही थे, और लास्ट वाला जो था वो 1936 में मर गया। So answer is true. Last one, दरवाजा बंद करो। Attempts to find living thylacines are now rarely made. और आज के जमाने में उसको जिंदा ढूंढने वाले प्राणी को के लिए बहुत कम एफर्ट्स करते हैं लोग। क्या हम उसको ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं? We don't know. Answer is Not given. not given. All clear now until here? Okay. This was the reading passage. Reading passage 2, we have palm oil, and we have labeled paragraphs. So look at A. What does it say? It talks about palm oil. Palm oil is an edible oil. Edible oil is like khadya tel, derived from the fruit of the African oil palm tree. It's a tree जहाँ से हमें oil मिलता है। और ये जो पेड़ है, I'll give you a basic idea, basic knowledge about it. ये पेड़ और ये जो पाउंड है, इसके अंदर इतनी सारी गुण है, यानी वेराइटीज है कि हमारे कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फूड के अंदर पाम ऑयल यूज होता है। लेकिन पाम ऑयल बनाने के लिए हमें जगह बहुत चाहिए।
तो इसकी वजह से पूरे दुनिया में जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जहां पे हम पेड़ को कट करते हैं, तो पेड़ कट करके, यानी जो नेचुरल रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट का क्या मीनिंग है कि पूरा जंगली जंगल जिसमें हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है। एक ट्री है तो ट्री कोई एनिमल को शेल्टर देता है, वो एनिमल वापस कुछ और शिकार करता है, उसका जो शिकार है वो वापस कुछ कीड़े मकोड़े खाता है, वो कीड़े मकोड़े वो मिट्टी खाती है। तो पूरा एक सर्कल होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और जब वो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और वो वहां पे निकाल देते हैं हम जो नेचुरल सिस्टम है, एनिमल्स वगैरह निकाल देते हैं, और वहां पे हम पाम ट्रीज लगाते हैं जिससे हमें पैसा मिले, बिकॉज पाम ट्री में बहुत पैसा है। तो बेसिकली हम पेड़ ही लगा रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल सिस्टम है जो प्लैनेट के लिए अच्छा है, वो हम टेम्पररी प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट का कबाड़ा करते हैं। दिस इज व्हाट पाम ट्री इज. So it's an edible oil from the African oil palm tree and is currently the most consumed vegetable oil in the world. Right? So oil. It's almost certainly in the soap we wash. हम जो साबुन लगाते हैं उसमें होता है with in the morning. The sandwich we have for lunch, जो sandwich खाते हैं उसमें भी है, and the biscuit we snack during the day. और बिस्किट में भी होता है. So as I said, it's a very profitable oil. Why is palm oil so attractive for manufacturers? इतना attractive क्यों है? Primarily because its unique properties, यानी उसके अंदर जो चीजें हैं, such as remaining solid at room temperature, वो room temperature में भी solid रहता है, make it an ideal ingredient for long-term preservation, allowing many packaged foods in supermarket shelves to have best before dates of months, even years into the future. यानी अगर हम कोई चीज खाते हैं जो 6 महीने पुरानी है और वो वैसी की वैसी लगती है, that is because of the palm oil. यानी पामोलिन तेल पण कहेवाय. So it's palm, right? So that is why it is so popular. So reading passage 2 has 8 sections. हमारे पास 8 पैराग्राफ है और उसमें से हमें पॉइंट आउट करना है कि ये जो बेसिक एग्जांपल या सेंटेंस है वो कौन से पैराग्राफ में है, राइट? So let's see if you can identify examples of a range of potential environmental advantages of palm tree cultivation. यानी ऑयल पाम ट्री का जो कल्टीवेशन खेती बाड़ी करते हैं उससे पर्यावरण पे कौन से फायदे होते हैं उसके एग्जांपल्स. डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था के बारे में बात हुई है which controls the environment impact of palm oil production. यानी पाम ऑयल प्रोडक्शन से पर्यावरण पे जो नुकसान होता है उसको हैंडल करने के लिए एक कंपनी क्या करती है उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है. Examples of the widespread global use of palm oil. पाम ऑयल के क्या क्या उपयोग है दुनिया भर में. Reference to a particular species, एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात हुई है which could benefit the ecosystem of oil palm plantation. यानी जितने ऑयल palm trees लगाते हैं उससे कौन सी ऐसी प्रजाति है प्राणी की जिसको फायदा होगा. Figures illustrating, ऐसे नंबर, ऐसे आंकड़े जो बताते हैं the rapid expansion of the palm oil industry, यानी कितनी रफ्तार पे पाम इंडस्ट्री बढ़ रही है वो आंकड़े कहाँ लिखे हैं. An economic justification for not opposing the palm oil industry, लोग पाम ऑयल इंडस्ट्री का विरोध क्यों नहीं करते हैं उसके पीछे का आर्थिक कारण, आर्थिक यानी पैसे वाला कारण, कि इतने पैसे हम कमा रहे हैं तो कैसे उसको अटका दें. Examples of creatures badly affected by the establishment of oil palm plantation. उसको लगाने से, oil palm plantation को establish करने से किस creatures, कौन से जीवों को बहुत बुरा असर होता है उसके एग्जाम. तो ये हमें फाइंड आउट करने. બધા क्वेश्चन समझ पड़ी ने? तो आ જેટલા ક્લિયર સમજ પડશે તેટલું ક્લિયર આન્સર મળશે. So answer the first one. Which one did we read now? 16. 16, yes. Economic justification is why it is benefit. जो justify નથી કર્યું, but they have given examples of the widespread global, એટલે biscuits and long term preservatives માં આપણે એને use કરીએ. સમજ પડે છે બધાને કે ગાડી સ્લો કરું? સુતેલા છે બધા બોલતા. Good morning.
બરાબર છે. उसका આવું બોલવાનું તો આ બોલે એના બોલ છે નહીં તો બંધ કરી નાખો. All right, so let's read the next one. Drashti, please read me paragraph. Yes, sir. Many farmers have seized the opportunity to maximize the planting of oil palm trees. Between 1990 and 2012, the global land area devoted to growing oil palm trees grew from 6 to 17 million hectares, now accounting for around 10% of total cropland in the entire world. From a mere 2 million tons of palm oil being produced annually globally 50 years ago, there are now around 60 million tons produced every single year, a figure looking likely to double or even triple by the middle of the century. Many farmers यानी बहुत सारे किसानों को पता चला कि भाई ये तो सबसे उपयोगी प्लांट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, they have seized the opportunity, यानी ये मौके को उन्होंने पकड़ लिया है to maximize the planting of oil palm trees. कि जमीन को खाली करो, उसके ऊपर कोई भी पेड़ है उसको निकालो और वहां पे लगाओ ऑयल पाम ट्री. और 1990 से 2012 तक में यानी 22 इयर्स के अंदर द ग्लोबल लैंड एरिया डिवोटेड to growing oil palm trees, यानी जो जमीन जो थी grew from 6 यानी पहले थी 6 मिलियन हेक्टेयर्स, वो अब हो गई है 17 मिलियन हेक्टेयर्स. यानी इतनी सारी जमीन हमने इसके प्लांटेशन में ऑक्यूपाई कर दी. नाउ अकाउंटिंग फॉर अराउंड 10% ऑफ टोटल क्रॉप लैंड इन द एंटायर वर्ल्ड. यानी दुनिया में जितने भी क्रॉप लैंड यानी खेतीबाड़ी जो एग्रीकल्चर हम करते हैं उसमें से 10% एवरी सिंगल ईयर, अ फिगर लुकिंग लाइकली टू डबल और इवन ट्रिपल बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी. यानी कि अगले 20-30 सालों में ये नंबर डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा. सो नंबर्स आ गए हैं हमारे पास. वी हैव द फिगर्स. सो एनी आंसर हियर? वेयर डिड यू रीड बी? व्हिच वन? 18. Now it is 18, right? Figures illustrating the rapid expansion of the palm oil industry. जब हम एक्चुअली रीडिंग करेंगे एग्जाम में तो आपका रीडिंग कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि ऐसे आप ऐसे नजर मारो ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा पढ़ो और आपको इतना समझ में आना चाहिए. Dipen, please read C paragraph. However, there are multiple reasons why conservationists cite the rapid spread of oil palm plantations as a major concern. There are countless news stories of deforestation, habitat destruction, and dwindling species populations, all as a direct result of land clearing to establish oil palm tree monoculture on an industrial scale, particularly in Malaysia and Indonesia. Endangered species, most famously the Sumatran orangutan, but all rhinos, elephants, tigers, and numerous other fauna have suffered from the unstoppable spread of oil palm plantations. Okay. However, there are multiple reasons. ये तो हमने प्रॉफिट की बात की, लेकिन बहुत सारे कारण है why conservationists यानी जो पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं cite the rapid spread of oil palm plantation as a major concern. तो पर्यावरण प्रेमी लोग जो है ये इसको बहुत चिंता का एक इश्यू समझते हैं. There are countless news stories, बहुत सारी स्टोरीज आती है of deforestation, पूरे के पूरे जंगल को निकाल दिया. Habitat destruction, habitat यानी कोई प्राणी का जो नेचुरल पर्यावरण है उसको निकाल दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड dwindling species population यानी प्राणी की जो एक प्रजाति थी उनकी पॉपुलेशन कम हो गई. जैसे कल हमने पढ़ा था अबाउट what was it, thylacine, right? Thylacine. तो वैसे ही dwindling species population all as a direct result of land clearing. क्यों? क्योंकि हमने वो जमीनों को क्लियर कर दिया to establish oil palm tree monoculture on an industrial scale. Industrial scale का क्या मीनिंग होता है? बहुत बड़े पैमाने पे हमने ये किया है. मोनोकल्चर यानी क्या? जब प्लांट में एक ही प्लांट उगाते हैं
तो उससे क्या होता है, जमीन को कोई प्रकार का फायदा नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक कैरी की वाड़ी है, तो उसमें सिर्फ कैरी है, तो उससे एनवायरमेंट का कोई फर्क नहीं, बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज इट्स मोनोकल्चर। तो ये सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए है, और अगले 100 सालों में वो जमीन यूजलेस हो जाए, बिकॉज जमीन को सारी वेराइटी चाहिए एक दूसरे को डिपेंड करने के लिए। तो इवन इफ यू हैव अ वाड़ी, यू आर नॉट डूइंग गुड बिकॉज यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट। अ नेचुरल फॉरेस्ट, अ रेन फॉरेस्ट सप्लाइज एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जमीन को क्लियर कर रहे हैं फॉर द फार्मिंग ऑफ पाम ट्री। सो पर्टिकुलरली कहाँ पे, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये जगहों पे हो रहा है। सो वहां पे बहुत सारी स्पीसीज खतरे में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज, मोस्ट फेमसली द सुमात्रन ओरांगुटान, but also rhinos, elephants, tigers, and numerous other fauna. Fauna is what? Like wildlife. Have suffered from the unstoppable spread of oil palm plantation. इसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियों का नुकसान हुआ है. All right. So any answer here? Anyone? 20. Yes, 20, correct. Examples of creatures badly affected by the establishment of oil palm plantation. उसके examples, ये सारे examples थे, Sumatran orangutan, right? Exactly. All right, let's read the D paragraph. Sarang, you're reading D paragraph, both the parts. Palm oil is surely one of the greatest threats to the global biodiversity, declares Dr. Farnon Elwood of the University of the West of England, Bristol. Palm oil is replacing rainforest, and the rainforest is where all the species are. That's the problem. This has led to some radical questions among environmentalists, such as whether consumers should try to boycott palm oil entirely. Meanwhile, Bhavani Shankar, professor at London School of Oriental and African Studies, argues it's easy to say that palm oil is the enemy, and we should be against it. It makes for a more dramatic story, and it's very intuitive. But given the complexity of the argument, I think a much more nuanced story is closer to the truth. Palm oil is surely one of the greatest threats to global biodiversity. यानी जो मैंने the whole ecosystem की बात की थी, तो जो पूरी biodiversity होती है उसको बहुत बड़ा खतरा है. क्यों? Because उस एक पेड़ के लिए हम बाकी सारी species को disturb करते हैं. Declares Dr. Farnon Elwood. He is from England, Bristol. वो क्या बोलते हैं कि palm oil is replacing rainforest. जो natural forest है उसको हम replace कर रहे हैं, and rainforest is where all the species live. यानी जो variety होती है वो सारी वहां पे रहती है. That's a problem that has led to some radical questions among environmentalists, such as whether consumers should try to boycott palm oil entirely. तो इससे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा होता है, और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या लोगों को पाम ऑयल को बाइकआउट कर देना चाहिए, कि हमें इस चीज को चाहिए ही नहीं, फिर ही हम इसकी खेती को बंद कर पाएंगे. तो वहां पे एक ऑपोजिट में भवानी शंकर, प्रोफेसर एट लंदन कॉलेज ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, उसका कहना है कि भाई इट्स इजी कि आप पाम ऑयल को एनिमी बताओ, एंड वी शुड बी अगेंस्ट इट. इट मेक्स फॉर अ वेरी ड्रामेटिक, मोर ड्रामेटिक स्टोरी, बट इट्स वेरी इंट्यूटिव. अगर हम समझे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आई थिंक अ मच मोर न्यूआंस स्टोरी इज क्लोजर टू द ट्रूथ. कि ये हकीकत नहीं है कि भाई पाम ट्री बुरी है, उसके बहुत सारे फायदे हैं जो हम समझते नहीं है. Is there anything that you can match here? No, nothing. See, there is no economic justification, because economic justification की hint दी है, लेकिन उसने कुछ describe नहीं किया कि इससे इतने लोगों की नौकरी मिलती है, इतने लोगों को खाना मिलता है, इतने लोगों का पेट भरता है. अगर ऐसा लिखा है
that would be the economic justification. लेकिन वो opposition કર્યું છે economic નથી. opposition કર્યું છે હા. ખાલી opposition ને introduce કર્યું. તો you can predict કે હવે જે opposition હશે એ આના પછીના પેરેગ્રાફમાં હશે. આ કયું હતું D. બરાબર ને? આ તમે જેટલા વધારે પેટર્ન્સ રીડ કરો એટલે તમને સમજ પડે કે પેલા ડોક્ટરે શું કીધું કે ભાઈ આપણે એની પોઝિટિવ સાઈડ હજુ સમજ્યા જ નથી અને પોઝિટિવ સાઈડ જે રિયાલિટી છે એ નજીક છે. મીન્સ હવે આના પછીનો જે પેરેગ્રાફ હશે પ્રેડિક્શન છે કે એ 19th નો આન્સર હશે. E or F, બરાબર? Let's see what is E. Hence you are reading E paragraph. One response to the boycott movement has been the argument of the vital role palm oil plays in lifting many millions of people in the developing world out of poverty. Is it desirable to plan to have palm oil boycotted, replaced, eliminated from the global supply chain? Given how many low-income people in developing countries depend on it for their livelihoods, how best to strike an utilitarian balance between these competing factors has become a serious bone of contention. Bone of contention is an idiom. मैंने आपको बताया था bone of contention यानी कोई भी झगड़े की जो फसाद है, झगड़ाનો कारण જેના લીધે લોકો ઝઘડે. જેમ કે you and your brother or you and your sister are fighting at home for TV channel, TV remote માટે. હવે તો ફાઇટ ઓછી થઈ ગઈ, બટ પહેલાના જમાનામાં એ જ હતું કે ટીવી માટે લડતા કે મારે આ જોવું છે ને તારે આ જોવું છે. The TV was the bone of contention, झगड़ाનું कारण. So one response to the boycott movement यानी जो लोग बोलते हैं कि भाई इसको boycott करें यानी पाम ऑयल को बॉयकॉट करें, निकालें, हमें उसका बहिष्कार करना है, उसके सामने लोगों ने ये रिस्पांस दिया है has been the argument for the vital role palm oil plays. यानी palm oil का कितना महत्वपूर्ण रोल है in lifting many millions of people, लाखों लोगों को गरीबी में से निकालता है. डेवलपिंग वर्ल्ड यानी पुअर कंट्रीज में उनको गरीबी से बाहर निकालता है. in the developing world out of poverty. Is it desirable to have palm oil boycotted? यानी क्या अच्छा लगेगा कि हम इतनी अच्छी चीज को बायकॉट करें, रिप्लेस्ड, एलिमिनेटेड फ्रॉम द ग्लोबल चेन सप्लाई? ये जान के given how many low income people in developing countries depend on it for their livelihoods, लोग अपनी गुजारे के लिए, अपने पेट भरने के लिए कितने लाखों लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या ये जान के भी हम इस चीज को बायकॉट कर सकेंगे? How best to strike a utilitarian balance? हम एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस कैसे लाए between these competing factors has become a bone of contention. यानी अब ये दोनों चीज environment versus लोगों का पेट भर रहा है, तो ये दोनों चीज की वजह से ये चीज एक झगड़े का रूप हो गई. That is the bone of contention. That is how to bring a utilitarian balance. All right, so as we predicted, can we say 19 is the answer? Yes. Yes, right? Yes. The answer is an economic justification for not opposing the oil industry, right? All right, Prachi, you're reading F. Yes, sir. Even the deforestation arguments isn't as straightforward as it seems. Oil palm plantations produce at least 4 and potentially up to 10 times more oil per hectare than soybean, rapeseed, sunflower, or other competing oils. That immensely high yield, which is predominantly what makes it so profitable, is potentially also an ecological benefit. If 10 times more palm oil can be produced from a patch of land than any competing oil, then 10 times more land would need to be cleared in order to produce the same volume of oil from that competitor. As for the question of carbon emission, the issue really depends on what oil palm trees are replacing. Crops vary in the degree to which they sequester carbon. In other words, the amount of carbon they capture from the atmosphere and store within the plant. The more carbon a plant sequesters, the more it reduces the effect of climate change. As Shankar explains,
palm oil production actually sequesters more carbon in some ways than other alternatives. Of course, if they are cutting down virgin forest, it's terrible. That's what happening in Indonesia and Malaysia. It's been allowed to get out of hand. But if it's replacing rice, for example, it might actually sequester more carbon. Even a deforestation argument isn't as straightforward as it seems. यानी जो हम पेड़ पौधे को काटने की बात करते हैं वो भी इतना इजी नहीं है यानी समझना. Oil palm plantations produce at least 4 or potentially up to 10 times more oil per hectare than soybean, rapeseed, sunflower or other competing oils. यानी तेल ही बनाना है हमें. दूसरे जो भी तेल है उसमें जितनी जमीन की जरूरत पड़ती है उससे 1/10 में ये इसमें से पाम ऑयल में से निकलता है. इतना सारा तेल निकलता है. दैट इमेंसली हाई यील्ड यानी देखो इसीलिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, विच इज प्रीडोमिनेंटली व्हाट मेक्स इट सो प्रॉफिटेबल. यानी एक ही पेड़ से आपको इतना सारा तेल निकल रहा है, इज पोटेंशियली आल्सो एन इकोलॉजिकल बेनिफिट. तो यानी आप ज्यादा जमीन की जगह कम जमीन में ये कर रहे हैं. इफ 10 times more palm oil trees can be produced from a patch of land, अगर इतना सारा तेल अगर हम एक पैच ऑफ लैंड में से बनाएंगे then any competing oil, then 10 times more land would need to be cleared in order to produce the same volume of oil from the competitor. यानी अगर उसके हम कोई दूसरे सब्स्टिट्यूट्स ढूंढेंगे कि चलो इसकी जगह हम कुछ और उगाएंगे उसमें से तेल निकालेंगे, तो वो तेल के लिए जमीन ज्यादा चाहिए. तो इसीलिए वो डिफॉरेस्टेशन जो है वो इतना बुरा भी नहीं है. As for the question of carbon emission, अगर हम pollution की बात करें, the issue really depends on what oil palm trees are replacing. वो किस चीज को replace कर रहे हैं. Crops vary in the degree to which they sequester carbon, यानी वो कितना pollution निकालते हैं, trees निकालते हैं, वो सवाल है. In other words, the amount of carbon they capture from the atmosphere and store within the plant. यानी ये plants कितना pollution consume कर सकते हैं. अगर वो ज्यादा करते हैं तो पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, right? The more a carbon a plant sequesters, यानी जितना वो ज्यादा collect करता है, the more it reduces the effect of climate change. तो वो अच्छा है. As Shankar explains कि palm oil production जो है actually sequesters more carbon in some ways than other alternatives. दूसरे पेड़ों के मुकाबले ये ज्यादा pollution अंदर लेता है, यानी वो अच्छा है. Of course, if you're cutting down virgin forest, it's terrible. यानी आप एक rain forest, एक proper घने जंगल को काट रहे हैं, वो तो बुरी बात है. But that's what's happening in Indonesia and Malaysia. It's been allowed to get out of hand. हम natural plants को काट रहे हैं. But if it's replacing rice, for example, अगर हम already हमारे जो developed जमीन है जहाँ पे खेतीबाड़ी करें उसको निकालें और उसकी जगह पे हम वहाँ पे palm oil लगाएं, for example, it might actually sequester more carbon. तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी ज्यादा कार्बन का मुकाबला कर पाएंगे. This is an argument in favor of palm oil tree. So answer now. 14. Is it? Which was this paragraph F, right? Example of a range of potential environmental advantages of oil palm tree cultivations. तो यही था हमने जो पढ़ा. All right, F, and now let's read G and H. Okay, so to read G, Apeksha, can you read it? Which paragraph? Can you please tell me? G. Okay. The industry is now regulated by a group called the Round Table on Sustainable Palm Oil, consisting of palm growers, retailers, product manufacturers, and other interested parties. Over the past decade or so, an agreement has gradually been reached regarding standards that producers of palm oil have to meet in order for the product to be regarded as officially sustainable. The RSPO insists upon no virgin forest clearing, transparency, and regular assessment of carbon stocks, among other criteria. Only once these requirements are fully satisfied is the oil allowed to be sold as certified sustainable palm oil. Recent figures show that the RSPO now certifies around 12 million tons of palm oil annually, equivalent to roughly 21% of the world's total palm oil production.
तो इंडस्ट्री इज नाउ रेगुलेटेड, यानी ये रेगुलेशन का क्या मीनिंग है, उसके ऊपर गवर्नमेंट देख रेख करती है, उसके लिमिट कैपिंग करती है by a group called the Round Table of Sustainable Palm Oil. Sustainable का क्या मीनिंग है, लॉन्ग टर्म, राइट, यानी RSPO. उसका काम क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ पाम ग्रोअर्स जो पाम उगाते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, अदर इंटरेस्टेड पार्टीज, जिसको पाम में इंटरेस्ट है वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है. Over the past decade, पिछले 10 सालों में और so, an agreement has gradually been reached regarding standards that producers of palm oil have to meet. उनको कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उनको पूरी करनी पड़ती है in order for the product to be regarded as officially sustainable. यानी वो ऐसा ही प्रोडक्ट बना सके वो लॉन्ग टर्म के लिए है, नॉट जस्ट कि एक बार निकाल दिया, प्रॉफिट कमा लिया एंड डन, ऐसा नहीं. RSPO इंसिस्ट, उनका ये कहना है अपॉन नो वर्जिन फॉरेस्ट क्लियरिंग, कि नेचुरल फॉरेस्ट को आप क्लियर करके वहां पे खेती नहीं कर सकते. ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलर असेसमेंट ऑफ कार्बन स्टॉक्स अमंग अदर क्राइटेरिया, कि आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, रेगुलर असेसमेंट कि कितना कार्बन स्टॉक इकट्ठा हो रहा है. Only once these requirements are fully satisfied, एक बार आपने ये सारे requirement complete कर दिए, is the oil allowed to be sold, और फिर आप ये ऑयल को बेच सकते हैं. Certified Sustainable Palm Oil, CSPO. Recent figures show, और अभी के आंकड़े यही दिखाते हैं, that RSPO now certifies around 12 million tons of palm oil annually, equivalent to roughly 21% of the world's टोटल पाम ऑयल प्रोडक्शन. उसमें से 21% जो तेल आता है वो भी पूरा रेगुलेटेड है, यानी उसके ऊपर गवर्नमेंट और ये RSPO का देखना है कि ये लोग सही तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं, नॉट डूइंग इट इलीगली, या फिर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. Anyone? 15. It is the description of an organization which controls the environmental impact of palm oil production. So that is the RSPO. So this is G. So the only one left is 17, right? Let's read the final paragraph. And to read this, Shivani, can you read it? Yes, sir. There is even hope that oil palm plantation might not need to be such sterile monocultures or green deserts as Elwood describes them. Now, research at Elwood's lab hints at one plant which might make all the difference. The bird's nest fern grows on trees in an epiphytic fashion, means it's depend on the tree only for support, not for nutrients, and in native to many tropical regions. Where as a keystone species, it performs a vital ecological role. Elwood believes that reintroduction the bird's nest form into oil palm plantation could potentially allow these areas to recover their biodiversity, providing a home for all manner of species, from fungi and bacteria to invertebrates such as insects, amphibians, reptiles, and even mammals. So there is even hope that oil palm plantations might not need to be such sterile monocultures. ऐसी जरूरी नहीं कि आपकी बाड़ी में सिर्फ और सिर्फ यही प्लांट होना चाहिए और just a green desert as Elwood described them. कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो बुरी चीज है. अभी की जो नई रिसर्च है at Elwood's lab hints at one plant which might make all the difference. एक दूसरा प्लांट है जो फर्क ला सकता है. The bird's nest fern, right? The Aspelnium nidus grows on trees. वो एक ऐसा पेड़ है जो पेड़ों पे उगता है in a epiphytic fashion. Epiphytic का मीनिंग है यानी कोई भी प्लांट जो अपने ग्रोथ के लिए हवा से और पानी में से न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करता है और वो दूसरे पेड़ के ऊपर उग सकता है. Meaning that it is dependent on the tree only for support. वो सिर्फ सपोर्ट के लिए, not for nutrients. यानी वो उसका पैरासाइट नहीं है, परजीवी नहीं है. And is native to many tropical regions. यानी बहुत सारी जगह पे वो native है. Whereas a keystone species, it performs a vital ecological role.
तो ये हम लगा सकते हैं Elwood believes that reintroducing the bird's nest fern, अगर ये इंट्रोड्यूस करे into oil palm plantations could potentially allow these areas to recover their biodiversity. इसको लगाने से वही जगहों को वापस उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है मिलेगी, प्रोवाइडिंग अ होम फॉर ऑल मैनर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया. सबको एक घर मिलेगा टू इनवर्टिब्रेट्स सच एज इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड इवन मैमल्स. हर प्रकार के प्राणी को रहने के लिए एक हैबिटेट मिलेगा विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल हैबिटेट. So can we have the answer for 17th one? Yes. Reference to a particular species which could benefit the ecosystem of oil plant plantation. So that reference is, yes, the fern, bird nest fern, right? So that is the H1. All right, so now giving you guys 2 minutes to solve these questions. Which two statements are made about the round table of sustainable palm oil? उनके बारे में कौन सी दो चीजें बोली गई है? Its membership has grown steadily over the course of the last decade. पिछले 10 सालों में उसके members बढ़ गए हैं. Not given. ऐसा कुछ दिया है? No. It demands that certified producers be honest and open and honest about their practices. वो ये डिमांड करता है कि जो भी उसको उगाने वाले हैं वो एकदम ऑनेस्टली उनको बताए कि वो कैसे खरीदी उसको बना रहे हैं. It took several years to establish its set of criteria. उसके नियम बनाने में बहुत साल लगे for sustainable palm oil certification. Its regulations regarding sustainability, उसके जो regulations है, they are stricter than those governing other industries. दूसरी industries के मुकाबले इसके नियम और कड़क या सख्त है. क्या दूसरी industry के साथ कोई comparison किया गया है? No. So you know this one is wrong. The first one is wrong. It was formed at the request of environmentalists concerned about the loss of virgin forest. इसको तब बनाया गया जब environmentalist वालों को concern हुआ कि भाई आप forest को निकाल रहे हैं तो ये गलत है. ऐसा कुछ बताया गया नहीं है. So the correct answers are, it took several years to establish, बहुत साल लगे उसको बनाने में, for sustainable oil palm certification देने. तो यहाँ पे लिखा है, over the past decade, the agreement has gradually been reached regarding the standards here. The industry is now regulated by a group of people. वो लोग बनाते हैं. समझ पड़ी? So answer is B and C. क्राइटेरिया बनाने में several years लगे, नहीं वो 10 साल लगे उसको बनाने में, and they want honest practice. So what are the keywords you got? It was also said that they had certificate assessment. They were doing regular assessment and all. Yes, exactly. Yes. So your regular assessment of yeah, they insist upon it कि अभी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई वर्जिन फॉरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए. और जब ये रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं उसके बाद ही ऑयल इज अलाउड टू बी सोल्ड, और उसको CSPO ऑयल बोलते हैं, राइट? So over the past decade, an agreement has gradually been reached regarding the standards. यानी 10 साल लग गए उनको, 10 साल से ज्यादा लगे हैं over the past decade. इसके रूल्स बनाने में उनको 10 years लग गए, और वो लोग चाहते हैं कि जो भी रिटेलर उनके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर. Are we clear with this too? All right. So last part. Fill in the blanks. The one advantage of palm oil for manufacturers is that it stays dash even when not refrigerated. जब उसको फ्रिज में नहीं रखते तो भी वैसा ही वैसा रहता है. फर्स्ट पैराग्राफ में देखा है. Why is it so attractive? Such as solid at room temperature. वो कैसा रहता है रूम टेम्परेचर पे? It stays solid. So that's your first answer. When not refrigerated means something at room temperature. So the answer is solid. The dash is best known of the animal suffering habitat loss as a result of the spread of oil palm plantations. कौन सा ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा सफर करता है? तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज लिखे थे. कौन से थे?
देखो elephants, tigers, लेकिन most famously the Sumatran orangutan is the one that is suffering the most famously लिखा है, तो आपको वही आइडेंटिफाई करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा, because of its loss of habitat. So what is the answer? It is the Sumatran orangutan. As one of its criteria for the certifications of sustainable palm oil, एक criteria इनका ये है, the RSPO insists that growers check dash on a routine basis. Growers कौन सी चीज check करेंगे routine basis पे? चलो, I'll take you to the paragraph. Tell me. Here. Insist upon no virgin forest clearing, transparency and regular assessment. Regular checking of what? Of carbon stocks. Yeah, they have to check the carbon stocks. So coming back to your question. One of its criteria, the RSPO insists that growers check stock on a routine basis, and Elwood and his researchers are looking into whether the bird's nest fern could restore dash in areas where oil palm tree are grown. वो कौन सी चीज को restore करेगा? वो जो दूसरा plant है जो last paragraph में discuss हुआ है, यहाँ पे लिखा है. Where is it? Last third line. Yes, very good. Elwood believes that reintroducing the bird's nest fern into oil palm plantations could potentially allow this area to recover their biodiversity. That is your answer, correct. Elwood and his researchers are looking into whether could fern and restore where oil palm trees are grown. Are we clear with all the questions today? Yes. So next passage we have reading passage 3. Sir, can I? Yes, what was the question? Somebody was asking. All right, so building the skyline, the birth and growth of Manhattan skyscrapers. What is a skyline? Skyline is when you go to Mumbai and you go on that Marine Drive and you can see the entire city on the other side. You can see the whole city. That is called the skyline, right? The birth and growth of Manhattan's skyscrapers. यानी Manhattan जो city है, which is near New York, उसके जो skyscrapers यानी जो लंबी इमारतें हैं, वो कैसे बनी? उसका growth. Catherine L. Chester reviews a book by Jason Barr. So Jason Barr has written a book, and this is a book review about the development of New York City. New York City के development के बारे में, especially Manhattan. All right, so let's start with the reading. First one, Ria, can you read the first one? Yes, sir. In the building, the skyline, Jason Barr takes the reader through a detailed history of New York City. The book combines geology, history, economics, and the lot of data explained why business clusters developed where they did and how the early decisions of workers and firms shaped the skyline we see today. Building the skyline is organized into two distinct parts. The first is primary historical and addresses New York's settlement and growth from 1609 to 1900, and second deals primarily with the 20th century and is a compilation of chapters commenting on different aspects of the New York's urban development. The tone and organization of the book changes somewhat between first and second parts, and the later chapters incorporate aspects of Barr's related research papers. Okay, so in Building the Skyline, book का नाम है Building the Skyline. Jason Barr takes the reader, पढ़ने वाले को एक सफर पे ले जाता है through a detailed history of New York City. The book combines geology, यानी जमीन के बारे में बातें करता है, history के बारे में, economics के बारे में, and a lot of data to explain why business clusters develop
कि बिजनेसेस कैसे डेवलप हुए, वेयर डिड इट एंड हाउ द अर्ली डिसीजंस ऑफ वर्कर, वहां के उस जमाने के जो लोग थे, वर्कर्स एंड फर्म्स, वहां की कंपनियां जो थी, उन्होंने उनके जो डिसीजंस थे, हाउ दे शेप द स्काईलाइंस वी सी टुडे, यानी आज जो हमें बिल्डिंग देखने को मिलती है बड़ी बड़ी, वो कैसे बनी, किस डिसीजन से बनी, बिल्डिंग द स्काईलाइन। यानी ये जो बुक है वो दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। द फर्स्ट इज प्राइमरीली हिस्टोरिकल, पूरी इतिहास के बारे में है, एंड addresses न्यूयॉर्क सेटलमेंट, न्यूयॉर्क में जो लोग रहते थे, एंड ग्रोथ फ्रॉम 1609 टू 1900, 300 साल की पूरी डिटेलिंग है। The second deals primarily with the 20th century, यानी last 100 years में क्या क्या बदलाव आए, and is the compilation of chapters, बहुत सारे chapters है जिसको compile किया गया है, commenting on different aspects of New York's urban development, यानी वो अलग अलग सिटी के डेवलपमेंट के बारे में कमेंट करता है। The tone and organization of the book, ये बुक को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका जो टोन है, changes somewhat between the first and second parts, यानी दोनों पार्ट में पूरा टोन बदलता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन बदलता है। Is the latter chapters, यानी जो बाद वाले, यानी जो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक है, incorporates aspects of Barr's related research paper, यानी उसने जो रिसर्च की है वो पेपर्स भी वो सेकंड पार्ट में इन्वॉल्व करता है। तो अभी हमें पता चल गया व्हाट इज इट अबाउट। अभी पूरा पढ़ने से पहले विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि what point does Chester make about Barr's book in the first paragraph? पहले पैराग्राफ में शेस्टर उसके बारे में क्या कमेंट करती है? It gives a highly original explanation for urban development. Highly original यानी कि खुद का लिखा हुआ explanation है सिटी के बारे में। Elements of Barr's research paper are incorporated throughout the book. उसके जो रिसर्च पेपर है वो पूरी बुक में बटे हुए हैं, पूरी बुक में नहीं बटे हुए हैं, वो सिर्फ बुक के सेकेंड पार्ट में बटे हुए हैं। Other books that are available on the subject have taken a different approach, कि इस बुक के सामने मुकाबले दूसरी बुकों का पूरा अप्रोच अलग है, कोई दूसरी बुक के बारे में चर्चा नहीं हुई है। It covers a range of factors that affected the development of New York. ये बहुत सारे फैक्टर्स कवर करता है जिससे न्यूयॉर्क का विकास हुआ। So what is the closest answer? ये बुक के बारे में शेस्टर ने क्या बोला है? I already told you the two wrong ones. So now tell me, A or D? નથી કરું કોઈ આજે speaking? D, yes, correct. D is the correct answer. It covers a range of factors, बहुत सारे factors के बारे में बात करता है, historical, geographical, economic, ये सारे factors थे, right? क्या बोला है शेस्टर ने यहाँ पे? Look at the book combines. Look at शेस्टर ने लिखा है कि ये बुक के अंदर different factors है, geological, historical, economic and a lot of data to explain why business clusters, न्यूयॉर्क में जो बदलाव आए वो कैसे आए और उस चीज से पूरे शहर को आकार कैसे मिला। Alright, next question. So now let's read all the question. How does Chester respond to the information in the book about tenements? Tenements के बारे में उसका क्या कहना है? तो first keyword here. So now remember, आप जब रीडिंग करेंगे आपको ये कीवर्ड्स माइंड में रखने हैं। So here I am writing it, तो आपके माइंड में रहेंगे। The first keyword is tenement. What does Chester? Don't read the option. Options नहीं पढ़ने हैं, because अगर option पढ़ेंगे तो हम confuse हो जाएंगे। What does Chester say about chapter 6 of the book? So second keyword is chapter 6. Next question हमारे सामने है, what does Chester suggest about chapters focusing on the 1920s building boom? 1920s में जो बूम आए बिल्डिंग में, जो बदलाव आए, यानी जो ग्रोथ हुई, वो ग्रोथ के बारे में शेस्टर का क्या कहना है? तो व्हाट इज माय कीवर्ड? 1920s building. And what impresses Chester the most about the chapter on land values? Land values के ऊपर जो चैप्टर है उसमें कौन सी चीज उसको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है, वो ऑथर ने जो लिखी है? So answer will be land values.
લેન્ડ વેલ્યુઝ ચેપ્ટર. આ બધું તમારા માઇન્ડમાં રહેવું જોઈએ. નહીં રહે તો લખી કાઢવાનું સાઇડ પર, because these are the keywords that you are looking for. દેખાય છે ઓપ્શન્સ બધા ઉપર કે નહીં દેખાતા? દેખાય છે ને? ઓકે, ચલો આ સાઇડ પર લખી કાઢ્યા. So we have to answer questions 28, 29, 30 and 31. So tenement નો मीनिंग છે, a tenement means a multi occupancy building of any sort. कोई भी प्रकार की ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, ऑक्यूपेंट रहते हैं, यानी उसमें दुकान भी होगा, ऑफिस भी होगा, अपार्टमेंट भी होगा, बट पर्टिकुलरली अ रन डाउन अपार्टमेंट, यानी पूरा बुरी तरह, यानी बहुत पुराना खंडर अपार्टमेंट बिल्डिंग और स्लम बिल्डिंग, उसको बोलते हैं tenement. Let's look at the first next paragraph. All right, so Hetvi, can you read the next paragraph? Hetvi, are you there with us? All right, so Hetvi is not answering, so Chaitali, can you read the next paragraph? Yes, sir. Go ahead. Bar begins chapter 1 by taking the reader on a helicopter time machine ride, giving a fascinating account of how the New York landscape in 1609 might have looked from the sky. He then moves on to a subterranean walking tour of the city, indicating the location of rock and water below the subsoil. Before taking the reader back to the surface, his love of the city comes through as he describes various fun facts about the location of the New York residence of early 19th century Vice President Aaron Burr, as well as number of legends about the city. So बार क्या करता है, वो चैप्टर कैसे स्टार्ट करता है? चैप्टर 1 by taking the reader on a helicopter time machine, यानी ऊपर से पूरी शहर को आपको ऊपर से यात्रा कराता है, वो भी पास्ट में जाके, that is time machine ride, giving a fascinating account about how the New York landscape, वहां पे उस जमाने में ऊपर से कैसे न्यूयॉर्क दिखता था, in 1609 might have looked from the sky. He then moves on to a subterranean walking tour of the city, यानी वो नीचे जाके walking tour देता है, indicating the location of rock and water below the subsoil, यानी कि जमीन में नीचे किस लेवल पे पत्थर है, किस लेवल पे पानी है. सबटेरेनियन यानी जमीन के अंदर नीचे. बिफोर टेकिंग द रीडर बैक टू द सर्फेस, यानी वो पहले ऊपर से जाता है, फिर नीचे ले जाता है, फिर वो सरफेस पे जाता है. His love for the city comes through his he describes various fun facts. उसका जो प्यार है शहर के बारे में, वो कहाँ झलकता है? जब वो शहर के बारे में अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हमें बताता है. अबाउट द लोकेशन ऑफ द न्यूयॉर्क रेजिडेंस ऑफ अर्ली 19th century वाइस प्रेसिडेंट एरन बर्ग नाम के प्रेसिडेंट वहां पे रहते थे, एज वेल एज अ नंबर ऑफ लेजेंड्स अराउंड अबाउट द सिटी, कि सिटी में कौन बड़े बड़े लोग कहाँ रहते थे वो बताता है. तो उससे हमें उसका प्यार दिखाई देता है. फैनिल, कैन यू रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ? Yes, sir. Chapters 2 and 3 take the reader up to the Civil War, with chapter 2 focusing on the early development of land and the implementation of a grid system in 1811. Chapter 3 focuses on land use before the Civil War. Both chapters are informative and well researched and set the stage for the economic analysis that comes later in the book. I would have liked Barr to expand upon his claim that existing tenements prevented skyscrapers in certain neighborhoods because likely no skyscraper developer was interested in performing the necessary slum clearance. Later in the book, Barr makes the claim that the depth of the bedrock was not a limiting factor for developers, as foundation costs were a small fraction of the cost of development. At first glance, it is not obvious why slum clearance would be limiting, while more expensive foundations would not. चैप्टर 2 and 3, यहाँ पे आ गए हम. चैप्टर 2 and 3 टेक द रीडर अप टू द सिविल वॉर. यूएस में जो सिविल वॉर हुआ 1861 से 1865 में, with chapter 2 focusing on the early development of land and the implementation of a grid system. उन्होंने grid system लगाई थी 1811.
चैप्टर 3 फोकसेस ऑन लैंड यूज बिफोर द सिविल वॉर, वो कैसे जमीन को यूज करते थे। बोथ चैप्टर्स आर इंफॉर्मेटिव एंड वेल रिसर्च, अच्छे से रिसर्च करके बने हुए हैं, एंड सेट द स्टेज फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस दैट कम लेटर इन द बुक। आगे जाके वो जो बिजनेस की और इकोनॉमी यानी मनी की जो बात होती है उसके बारे में ये पूरा स्टेज क्रिएट करता है। आई वुड हैव लाइक्ड बार to expand upon his claim that existing tenements prevented skyscrapers in certain neighborhoods, because यानी अभी रीडर का यहाँ पे ये कहना है, ये जो जिस लेडी ने लिखा है, शेस्टर ने क्या लिखा है कि मैं चाहती थी कि वो इस टॉपिक यानी he would expand upon, यानी ये बात को ज्यादा डिटेल में समझाए, his claim upon existing tenements, tenements यानी वो जो पुरानी खंडर जो बिल्डिंग थी जो वहां पे ऑलरेडी थी, जिसकी वजह से वहां पे बड़े बड़े इमारतें नहीं बने, prevented skyscrapers in certain neighborhoods because likely no skyscraper developer was interested in performing the necessary slum clearance, क्योंकि उसने बोला था कि वहां पे किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी वहां के बिल्डर्स जो स्काईस्क्रेपर्स बनाने वाले लोग थे उनको वो स्लम वाली जगह को यानी वो खंडर बिल्डिंग वाली जगह को क्लियर करने में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये जो उसने लिखा है उसके बारे में वो जो रिपोर्टर है वो चाहती है कि काश ये इसने डिटेल्स में बताए। लेटर इन द बुक बार मेक्स द क्लेम, और फिर वो दूसरा एक दावा करता है दैट द डेप्थ ऑफ बेडरॉक, बेडरॉक का क्या मीनिंग है, the solid, नीचे लिखा है the solid hard rock in the ground that lies under a loose layer of soil, मिट्टी के नीचे जो दबा हुआ जो पत्थर है that is a bedrock, तो उसके बारे में दावा करता है was not a limiting factor for developers, कि नीचे पत्थर थे लेकिन वो पत्थर की वजह से उन्होंने अपना प्लान चेंज नहीं किया था। Its foundation costs were a small fraction of the cost of development, right? At first glance it is not obvious why slum clearance would be limiting, तो पहले नजर में पता नहीं चलता है कि यार वो उन्होंने ये स्लम क्लियरेंस क्यों नहीं किया, while more expensive foundations were not. So we have the keyword here. What was the keyword? Tenements. So now, how does Chester respond to the information in the book about tenements? Tenements के बारे में वो क्या चाहती है? She describes the reason for Barr's interest. उसको इस चीज में इंटरेस्ट क्यों था ये बताती है। She indicates a potential problem with Barr's analysis. उसकी analysis में एक problem दर्शाती है। She compares Barr's conclusion with that of other writers. दूसरे writers के साथ compare करती है उसका conclusion. She provides details about the sources Barr's used for his research. वो details बताती है उसकी research कहाँ से हुई थी उसके बारे में। Answer the question A, B, C or D. Yes, people online, what is the answer? B. Yes, correct. वो इंडिकेट क्यों करती है, क्यों बोलती है कि लोगों ने उस जगह पे उसने क्यों ठीक से समझाया नहीं, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग अगर चाहते थे तो वो क्लियर कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर उसने ठीक से एक्सपांड नहीं किया। समझ पड़े से बताना है आंसर केवल विल टाइप वो बी। ऑलराइट, नेक्स्ट कीवर्ड्स ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑलराइट, प्राची कैन यू रीड द नेक्स्ट वन? Yes, sir. Chapter 4 focuses on immigration and the location of neighborhoods and tenements in the late 19th century. Barr identifies 4 primary immigrant enclaves and analyzes their locations in terms of amenities available in the area. Most of these enclaves were located on the least valuable land between the industries located on the waterfront and the wealthy neighborhoods bordering Central Park. चैप्टर 4 बुक का जो चैप्टर 4 है वो फोकस करता है इमिग्रेशन, यानी जो बाहर से लोग आए न्यूयॉर्क में रहने के लिए और उनकी जो रहने की जो जगह थी, लोकेशन ऑफ नेबरहुड्स एंड टेनेमेंट्स, और उनकी जो सब बिल्डिंगें थी इन द लेट 19th century. लेट 19th century, व्हाट ईयर वुड दिस बी इन नंबर्स? कम ऑन, 1 8 8 0. This is called the late 19th century. समझ पड़े से बताना है? It is the 19th century.
not 1920. 1920 would be the 20th century. આ 1920 દેખાય ને ઉપર તમને, આને 20th century કહેવાય, આને 19th century નહીં કહેવાય. Okay, so now Barr identifies 4 primary immigrant enclaves. Enclaves यानी जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होती है, यानी जो ऐसी 4 बड़ी-बड़ी बिल्डिंग यानी लोकेशंस थे जहां पे इमिग्रेंट लोग रहते थे, and analyzes the location in terms of amenities available in the area. कि उस एरिया में कौन सी फैसिलिटीज थी उस हिसाब से वो करता है. Most of these enclaves were located on the least valuable land, यानी सबसे सस्ती जमीन पे थे. और जमीन कहाँ पे थी? It was located between industries, जो वाटर फ्रंट यानी जो नदी के सामने जो इंडस्ट्रीज थी उसके पीछे, and the wealthy neighborhoods bordering Central Park. Central Park के बाद जो रिच एरियाज थे उसके पीछे, यानी दोनों चीज के बीच में थे. नेक्स्ट. Roshni, can you read the next one? Yes, sir. Part 2 of the book begins with the discussion of the economics of skyscraper height. In chapter 5, Barr distinguishes between engineering height, economic height, and developer height, where engineering height is the tallest building that can that can be safely made at a given time. Economic height is the height that is most efficient from society's point of view, and developer height is the actual height chosen by the developer who is attempting to maximize return on investment. Part 2 of the book. Now, यहाँ तक हमने part 1 देखा. So part 2 of the book begins with a discussion of the economics of skyscraper height. यानी skyscrapers की height के बारे में बात करता है. In chapter 5 में क्या होता है? Barr distinguishes, यानी वो फर्क दिखाता है between engineering height, economic height, and developer height. Where engineering height is the tallest building that can be safely made at a given time. Engineering height यानी ऐसी height जो building किस हद तक बना सकते हैं. Economic height is the height that is most efficient from society's point of view. समाज के हिसाब से बिल्डिंग की सबसे ऊंची हाइट कितनी होनी चाहिए. And developer height is the actual height chosen by the developer who's attempting to maximize return on investment. तो ये height के बारे में बात करता है. Zakir, can you read the next one? The chapter 5 also has an interesting discussion of the technology advance that lead to the construction of skyscraper. For explain the introduction of iron and steel skillet frames made thick, land load bringing walls unnecessary. Sir, I can't read more. I'm busy here. Sorry, sir. Okay. Can I continue afterwards? Yeah. Thank you, sir. Chapter 5 also has an interesting discussion. You'll have to mute yourself. Yeah. All right. So chapter 5 also has an interesting discussion about the technological advances. यानी उन्होंने तकनीकी advances कौन से किए that led to the construction of skyscrapers. यानी फटाफट skyscrapers कैसे बने. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने उस जमाने में आयरन इंट्रोड्यूस किया, स्टील स्केलेटल फ्रेम्स यानी स्टील की पूरी फ्रेम लाई, मेड थिक लोड बेयरिंग वॉल्स, ऐसी वॉल्स बनाई जो वजन सहन कर सके. इट मेड लोड बेयरिंग वॉल्स अननेसेसरी, एक्सपेंडिंग द यूजेबल स्क्वायर फुटेज ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का पूरा स्क्वायर फुटेज को कैसे यूज करे, expanding it and increasing the use of windows and availability of natural light. कि बिल्डिंग ऐसी बनाई जाए जिसमें नेचुरल लाइट ज्यादा हो. चैप्टर 6, और यहाँ पे हमारा दूसरा कीवर्ड आता है. चैप्टर 6 then presents data on building height throughout the 20th century, यानी 1900 से 2000 तक की जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट के बारे में डेटा देता है. uses regression analysis to predict building construction. रिग्रेशन एनालिसिस करता है.
while less technical than research paper. Research paper से कम रहता है, on which the chapter is based. Technical details कम है. It is probably more technical than would be preferred by general audience. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साले ने इतना ज्यादा टेक्निकल लिखा है कि नॉर्मल इंसान पढ़ते पढ़ते कंटाल जाए. All right, so next is, what does Sester say about chapter 6 of the book? It contains conflicting data. ऐसा डेटा है जो एक दूसरे से विरुद्ध होता है. It focuses too much on possible trends के बारे में, जो possible उसके बारे में बोलता है. It is too specialized for most readers. ज्यादातर readers के लिए थोड़ा ज्यादा specialized हो जाता है. या it draws on research that is out of date. पुरानी डेट के बारे में वो research लेके आता है. 29th answer is what? B. How is it B? It doesn't focus too much on possible trends. It is too specialized for most readers. ज्यादातर रीडर को पढ़ते पढ़ते कंटाला आ जाएगा, बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल हो गया. वो बोला है ना उसने. Look at what does it say? कि while less technical than a research paper, उससे थोड़ा कम है. It is probably more technical than it is generally preferred by the audience. Audience को पसंद है. Now, are you seeing one pattern here? अगर आपको फटाफट सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन के कीवर्ड ही ढूंढने. समझ पड़े બધાને પેટર્ન? શું કર્યું મેં અહીંયા? સિમ્પલ. અત્યારે હું તો બધું ડિટેલમાં વાંચું છું, પણ આવી રીતે ડાયરેક્ટલી કરાય ને કીવર્ડ. આ જો આપણને ટેનેન્ટ્સ પછી નેક્સ્ટ આન્સર નીચે જ મળ્યો ને લાઈનમાં. હવે 1920 પણ એના લાઈનમાં જ મળશે. But with that, we'll also read some other questions with this. True, false. So it is yes, no, and not given. The description of the first chapter of how New York probably looked from air in the early 1600 lacks interest. यानी उसने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है कि जो न्यूयॉर्क ऊपर से कैसे दिखता था अर्ली 1600s में, वो इंटरेस्टिंग नहीं है. इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट इंटरेस्टिंग? ऑथर के हिसाब से उसने हेलीकॉप्टर व्यू के बारे में बोला है कि इट गिव्स अस अ हेलीकॉप्टर व्यू. हिज लव फॉर द सिटी, उसका जो प्यार है वो जो है गिव्स अ फैसिनेटिंग अकाउंट, यानी एकदम इंटरेस्टिंग अकाउंट देता है. गिविंग अ फैसिनेटिंग अकाउंट कि 1960 में कैसा लगेगा. सो व्हाट्स द आंसर? False. False is not your option, so you're wrong. It is no. No. If you write false, you're wrong. Chapter 2 and 3 prepare the reader well for material yet to come. आने वाले मटेरियल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करता है 2 and 3. तो 2 and 3 के बारे में क्या लिखा था उसने कि चैप्टर 2 and 3 जो है वो सिविल वॉर के बारे में बात करता है and set the stage for the economic analysis that come later in the book. यानी आगे के बारे में हमें तैयारी कराता है. Chapter 2 and 3 they take up the system. The 3 focuses on that. समझ पड़े छे 2 and 3 केवी रीते अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लैंड, लैंड के डेवलपमेंट के बारे में करता है. तीसरा जो है लैंड यूज के बारे में करता है. वो आगे के बुक के बारे में हमें प्रिपेयर करता है. So they prepare the reader well for material yet to come. Answer? Yes. 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 The biggest problem for many 19th century New York immigrant neighborhood was a lack of amenities. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इमिग्रेंट के लिए थी, जो उस एरिया में रहते थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एमिनिटीज नहीं थी, यानी फैसिलिटीज नहीं थी. यहाँ पे क्या लिखा है फैसिलिटीज के बारे में कि वहां पे जो बिल्डिंग्स थी, यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स सी आइडेंटिफाइज 4 बिल्डिंग्स यानी 4 एनक्लेव्स, और उस लोकेशन को एमिनिटी के जो इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज अवेलेबल इन उस एरिया में जो एमिनिटीज या फैसिलिटीज थी उस हिसाब से उसके बारे में चर्चा करता है. लेकिन क्या ये बोलता है कि फैसिलिटीज अच्छी थी या बुरी थी? Does he talk about it positive or negative? Not given. Not He given. only talks about the amenities, but he doesn't say कि is this a good facility or a bad facility. Amenity के बारे में, यानी आजू बाजू के घर के बारे में जो भी था. So your answer for this one is there a problem here? We don't know if it was a problem or not. So the answer here is not given.
इन द 19th सेंचुरी न्यूयॉर्क्स इमिग्रेंट्स यानी वो इमिग्रेंट्स यानी जो बाहर वाले लोग जो थे, इमिग्रेंट नेबरहुड tended to concentrate around the harbor. हार्बर यानी जो पानी वाली जो जगह होती है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, तो बंदरगाह के सामने थी, उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट करती थी। यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है हमारे पास कि उस जगह में मोस्ट ऑफ द एनक्लेव्स वर लोकेटेड ऑन द लीस्ट वैल्यूएबल लैंड, एकदम सस्ती जगह पे थे, बिटवीन द इंडस्ट्रीज, और वहां पे जो इंडस्ट्रीज थी जो वाटर फ्रंट के वहां पे थी उसके बाजू में थी, एंड द वेल्दी नेबरहुड्स उसके दोनों के बीच में थी, लेकिन वो वाटर फ्रंट के सामने नहीं थी क्योंकि वाटर फ्रंट के सामने इंडस्ट्रीज थी। चलो आंसर द लास्ट वन, ट्रू, यस, नो एंड नॉट गिवन। They tended to concentrate on the harbor. Harbor is the water side body. Anyone? ગેસ બી નહીં કરે ત્રણ ઓપ્શન માંથી, આટલું ગભરાય. શું છે આન્સર? નો. અગર ઇમિગ્રન્ટ લોકો ત્યાં હતા, ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી, તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ were concentrating on the waterfront. વોટરફ્રન્ટ પર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના પાછળ હતું ને, કારણ કે એ ન્યુયોર્ક ના પેલા સેન્ટ્રલ પાર્ક ના જે રિચ લોકેલિટી છે એના વચ્ચે ને ઇન્ડસ્ટ્રી વચ્ચે નેબરહુડ હતા ઇમિગ્રન્ટ લોકોના. તો ઇમિગ્રન્ટ લોકોના અગર વચ્ચે હશે તો પેલા સાઈડે નદી, પાણી પાસે કોણ હતું? પાણી પાસે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતી. અહીંયા લખેલું છે કે પાણી પાસે, હાર્બર એટલે પાણી વાળી જગ્યા. તો એ લોકોના નેબરહુડ did not concentrate the harbor because the industries concentrated on the harbor. The answer is no. Are we clear? Yes, sir. તો કેમ આન્સર નથી આપતા બધા? કેમ ગભરાયા કરે? Alright, let's read further. હવે આવી ગયું chapter 7. Okay, Ria, read chapter 7. Yes, sir. Chapter 7 tackles the bedrock myth, the assumption that the absence of bedrock close to the surface between downtown and midtown New York is the reason for skyscraper not being built between the two urban centers. Rather, Barr argues that while deeper bedrock does increase foundation cost, this costs were neither prohibitively high or were high, nor were they large compared to the overall cost of building a skyscraper. What I enjoyed the most about this chapter was Barr's discussion of how foundations are actually built. He describes the use of caissons, which enable workers to dig down for considerable distances, often between the water table, until they reach bedrock. Barr's thorough technological history discusses not only how caissons work, but also the danger involved. While this chapter references empirical research papers, it is a relatively easy read. So चैप्टर 7 जो है वो बेडरॉक मिथ के ऊपर फोकस करता है। बेडरॉक मिथ यानी बेडरॉक के बारे में जो मिथ थी, ऐसी मिथ का मीनिंग है ऐसी चीज जिसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं, सीक्रेट। व्हाट इज द मिथ? द अजम्पशन, ऐसा धारणा किया जाता है द एब्सेंस ऑफ बेडरॉक close to the surface between downtown and midtown New York is the reason for skyscrapers not being built. ऐसा था कि वहां पे बेडरॉक यानी पत्थर नहीं थे, तो उस जगह पे अगर पत्थर नहीं है तो बाकी की जमीन जो है कभी भी नीचे दब सकती है। तो ऐसा सोच के वहां पे ऐसा सोचा जाता है कि वहां पे बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाने को है बिटवीन द टू अर्बन सेंटर्स। तो वो मिथ के बारे में वो टैकल करता है और वो बोलता है रादर बार आर्ग्यूज दैट व्हाइल डीपर बेडरॉक डज इंक्रीज फाउंडेशन कॉस्ट, यानी अगर डीपर यानी अगर पत्थर बहुत नीचे है जमीन के अंदर तो फाउंडेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है। दिस कॉस्ट वर नाइदर प्रोहिबिटिवली हाई, लेकिन उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो महंगा था, वर दे लार्ज कंपेयर टू द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्काईस्क्रेपर।
कि यानी एक स्काई स्क्रेपर, इतनी बड़ी इमारत बनाने के कंपैरिजन में वो नीचे अगर खर्चा थोड़ा ज्यादा हो तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो उल्टा बोलता है. What I enjoyed the most about this chapter was vast discussion of how foundations are actually built. कि मुझे मजा इस बात में है कि उसने बताया कि फाउंडेशन एक्चुअली कैसे बनता है. It describes the use of caisson. Caissons क्या है? Which enable workers to dig down for considerable distance. यानी जमीन के अंदर उतर के वो लोग काम कर सकते हैं. Often below the water table, यानी पानी है उसके भी अंदर चले जाते हैं until they reach bedrock. Bar's thorough technological history, उसकी जो technological history है, discusses not only how caissons work, वो caisson जैसी चीज कैसे काम करती है, लेकिन उसके साथ also the dangers involved, जो खतरे हैं उसके बारे में भी वो बात करता है. While this chapter references empirical research papers, ये चैप्टर में बहुत डिटेल भर के बहुत रिसर्च पेपर्स है. It is a relatively easy read, लेकिन फिर भी पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है लोगों. Chapter 6, what does, this is the one we were reading, right? Chapter 6, we did it, we already did it, right? What does chat suggest about chapters focusing on the 1920s building boom? अभी वो यहाँ पे आएगा. Okay, Prachi, read the next one. Yes, sir. Chapters 8 and 9 focus on the birth of Midtown and the building boom of the 1920s. Chapter 8 contains lengthy discussions of urban economic theory that may serve as a distraction to readers primarily interested in New York. However, they would be well suited for the undergraduates learning about the economics of cities. In the next chapter, Barr considers two of the primary explanations for the building boom of the 1920s, the first being exuberance and the second being financing. He uses data to assess the viability of these two explanations and finds that supply and demand factors explain much of the development of the 1920s. Though it enabled the boom, cheap credit was not, he argues, the primary cause. So chapter 8 और 9 जो है वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? The birth of Midtown के बीच में, यानी दो अर्बन सेंटर्स के बीच में जो जगह बनी उसको Midtown बोलते हैं, and the building boom of the 1920s. 1920s में बहुत सारी बिल्डिंगें बनना चालू हो गई. Chapter 8 contains lengthy discussions about urban economic theory. वो बहुत फोकस करता है अर्बन इकोनॉमिक यानी शहर की जो ग्रोथ हुई उसके बारे में. That may serve as a distraction to readers primarily interested in New York. जो लोग न्यूयॉर्क के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा. However, they would be well suited for undergraduate learning about the economies of cities. लेकिन अगर कोई अंडरग्रेजुएट है जो सिटी की इकोनॉमी के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए ये पढ़ना अच्छा रहेगा. In the next chapter, Barr considers two of the primary explanations. वो दो explanations को लेता है for the building boom of the 1920s. यानी 1920s में जो buildings की growth हुई बनी उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, उसके बारे में फोकस करता है. The first being exuberance. Exuberance is what? Exuberance is when people spend a lot of money. Exuberance, I'm giving you the exact meaning. Yeah, lot of happiness, joyful enthusiasm. लोगों का बहुत जोश है कि चलो सब शहर का विकास हो रहा है तो वो. In the second being financing, लोगों के पास पैसा आने लगा. He uses data to assess the viability of these two explanations. ये डेटा के साथ वो दोनों explanations को check करता है and finds that supply and demand factors explain much of the development of the 1920s. उस जमाने में supply भी थी और demand भी थी. Though it enabled the boom, और उससे ही वो हुआ, cheap credit was not, he argues, the primary cause. लेकिन लोन पे पैसा नहीं मिलता तो वो कारण नहीं है. So again, coming back to it, what does Chester suggest about chapters focusing on 1920s building boom? उसके बारे में वो क्या बोलता है? The information should have been organized differently. Information को अलग तरीके से organize करना चाहिए था. More facts are needed about the way construction was financed. कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कहां से मिला उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स होनी चाहिए थी. The explanation that is given for the building boom is unlikely. जो explanation उसने दिया है वो लगता नहीं है पॉसिबल है.
या फिर सम पार्ट्स विल हैव लिमिटेड अपील टू सर्टेन पीपल, उसके अंदर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कुछ लोगों को ही पसंद आएंगे, सबको पसंद नहीं आएंगे। डी। डी करेक्ट, द आंसर इज डी। यानी जो सिविल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसको वो इंटरेस्टिंग लगेगा, बाकी सबको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे उसने उसी के बारे में लिखा है कि however they would be well suited for undergraduates जो इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन it will be a distraction for readers जो न्यूयॉर्क पढ़ना चाहते हैं। In the final chapter, that is chapter 10, Barr discusses another of his empirical papers. Empirical is in well detailed, जो बहुत statistic और numbers के साथ जो data होता है उसको बोलते हैं empirical। तो he discusses another of his empirical papers, और दूसरे पेपर्स के बारे में, उसके रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कस करता है, that estimates मैनहट्टन लैंड वैल्यूज के, मैनहट्टन की जो जमीन के जो भाव थे फ्रॉम द मिड सेंचुरी 19th century टू द प्रेजेंट डे, आज के साथ वो डेटा को बताता है। द डेटा वर्क दैट वेंट इनटू दिस एस्टिमेशन इज पर्टिकुलरली इंप्रेसिव। इसमें उसने जितनी मेहनत की बहुत इंप्रेसिव है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, अंत में बार assesses whether skyscrapers are a cause or an effect of high land values, यानी कि ये जो बहुत भाव महंगे हो जाते हैं उसका ये कॉज है या फिर उसका ये इफेक्ट है। यानी कि स्काई स्क्रेपर अगर कोई जगह पे बनती है उससे जमीन के भाव बढ़ते हैं, या फिर जमीन बहुत महंगी होती है इसलिए लोग वहां पे लंबी इमारतें बनाते हैं, क्योंकि लंबी इमारतें में ज्यादा लोग एक जगह पे आ सकते हैं। तो इज इट अ कॉज और एन इफेक्ट ऑफ हाई लैंड वैल्यूज? He finds that changes in land values, यानी जो बदलाव आता है, predict future building height, और उससे डिसाइड होता है कि आगे जाके बिल्डिंग की हाइट कैसी होगी। यानी अगर जगह बहुत महंगी है तो वहां पे एक घर नहीं बनाएगा, वहां पे बहुत लंबी बिल्डिंग बनेगी। बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है। The book ends with an epilogue. Epilogue यानी जब ऑथर लास्ट में खुद का व्यू देता है, in which Barr discusses the impact of climate change on the city. Climate change यानी ग्लोबल वार्मिंग से सिटी में कौन सा बदलाव आया, and makes policy suggestion यानी कौन से नियम होने चाहिए for न्यूयॉर्क going forward, न्यूयॉर्क को कैसे आगे बढ़ना है। So what impresses Chester the most about the chapter on land values? उसको कौन सी चीज बहुत impress करती है? चलो, without looking at the option, you tell me what is impressive. The data work that went into these estimation is particularly impressive. उसने जिस तरह से उसका रिसर्च किया है वो काबिलियत तारीफ है। लैंड वैल्यू वाला चैप्टर में यहाँ पे। So what impresses Chester? The broad time period that is covered. इतना सारा time period उसने cover किया है वो। The interesting question that Barr asks, Barr जो सवाल पूछता है वो, the nature of the research into the topic, उसकी किस प्रकार की research थी वो, या फिर the recommendation Barr makes for the future, future के बारे में जो recommendation देता है। C. That is the correct answer. C is the correct answer. All right, last few questions and then we'll end. So we have done this 32 to 35 kaira apne badaye. Now answer the questions with the words here. And we have word summary given here. So complete the summary using the words from the box. तो पहले तो वर्ड्स देखेंगे, डेवलपमेंट प्लान्स, डीप एक्सकवेशन यानी बहुत ऊंडा ऊंडा खोद का, ग्रेट डिस्टेंस, एक्सेसिव एक्सपेंस ज्यादातर खर्चा, इम्पॉसिबल टास्क, एसोसिएटेड रिस्क उसके साथ जुड़ी हुई रिस्क, वाटर लेवल, स्पेसिफिक एरियाज, टोटल एक्सपेंडिचर पूरा खर्चा, एंड कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस। The bedrock myth. In chapter 7, Barr indicates how the lack of bedrock, जो bedrock नहीं था, close to the surface, does not explain why skyscrapers are absent from dash. तो वो बताता है कि वहां पे skyscrapers क्यों नहीं है, कहाँ पे नहीं है, चलो डिसाइड करो। उसने बोला कि सिटी के दोनों साइड के बीच में वहां पे बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनी क्योंकि वहां पे उस जगह पे बेडरॉक कम थे या बहुत नीचे थे। Look at the question here, bedrock myth here.
He says that there is an absence of bedrock close to the surface between downtown and midtown New York. यानी midtown और downtown के बीच का जो एरिया है वहां पे नहीं बन, यानी ये दोनों अर्बन सेंटर्स के बीच की जमीन है, वहां पे स्पेसिफिक नहीं बन. चलो आंसर द क्वेश्चंस. The answer is H. They were not built in the, they are absent from specific areas. He points out, वो ये बताता है that although the cost of foundation increases, यानी कि बनाने का भले खर्चा बढ़ जाता है, increases when bedrock is deep below, भले पत्थर बहुत अंदर होता है तो खर्चा बढ़ जाता है, the surface, below the surface, this cannot be regarded as dash. इसको हम महंगा खर्चा नहीं बोल सकते. जल्दी, come on, क्या मतलब वाला है? ID. D is the answer. Yes, can be regarded as excessive expense. उसको हम महंगा खर्चा नहीं बोल सकते, especially when compared to dash. जब हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो चिप्स भी ले ही लेंगे, तो ओवरऑल खर्चा I. Exactly. समझ पड़ी है? I कैम ने D कैम. This cannot be regarded as excessive expense, especially when compared to total expense. यानी बिल्डिंग का टोटल खर्चे के मुकाबले भाई ये खर्चा बड़ा नहीं लगता है. यहाँ पे लिखा ही है that these costs were neither prohibitively high nor were they large compared to the overall cost of building a skyscraper. Overall cost is what? It's total expenditure, and comparatively high is excessive expense. A particularly enjoyable part of the chapter, उस chapter के बारे में जो enjoyable बात थी, was Barr's account of how foundations are built. वहाँ पे जो उन्होंने लोगों ने underground जो चीजें बनाई, जिसमें वो पानी में उतरते थे, वो बहुत interesting है. He describes not only how dash are made possible by the use of caissons, यानी कैशंस यूज करके वो कौन सी चीज करते थे, कौन सी एक्टिविटी करते थे. यहाँ लिखा है I enjoyed the most about the chapter was how the foundation, so he describes the use of caissons which enable workers to dig down for considerable distance, बहुत अंदर तक गहराई में उतरते थे, below the water table until they reach bedrock. B. Yes, correct. The answer is B. It describes not only how deep excavations are possible by the use of caissons, but he also discusses their dash. उसका खतरा भी बताता है. The chapter is well researched but relatively easy to understand. F. Answer is F. Correct. Associated risk. सिर्फ उसकी बात नहीं करता है, वो ये भी बोलता है कि वो कितना खतरनाक, यहाँ पे बोलता है वो caissons. तो यानी but his thorough history discusses not only how the caissons work but also the dangers involved. Dangers involved is what? Danger का कीवर्ड है associated risk, उसके साथ जुड़े हुए खतरे की बात. That is my last chapter of this reading passage.